Hey everyone, welcome back to day 8 of our 30 days of CCNA lab series. Today you will learn one of the most powerful routing protocols in a CCNA, which is OSPF. By the end of this video, you're going to configure OSPF like a pro. So let's get started. Open your packet tracer and first build the topology. So we are going to use 4 routers. Okay, so it's like a ring topology. Then यहाँ पे 4 LAN हम क्रिएट करेंगे. So let's assign the IP addresses. Go to R1, configuration terminal, interface, IP address 192.168.1.1 255 255 255.0. No shutdown. Okay, now we will configure this link. Okay, interface serial 0301, IP address 10.0.0.1 255 55 255 252, clock rate 64,000, and then no shutdown. Go to router 2, no, enable configuration terminal, interface G00, IP address 192.168.2.1 with /24, no shutdown. Now 300, interface serial link 300 030, IP address 10.0.0.2 क्योंकि हमने वहाँ पे 1 लिया था, then /30. ओके, तो यहाँ पे आएगा 252, नो शटडाउन. ठीक है, तो लिंक इज अप नाउ. व्हाट इज हियर 031. ठीक है, इंटरफेस सीरियल 030 is changed to up. Interface serial 031, IP address 10.0.0.5 क्योंकि 5 and /30. Okay, clock rate will be 64,000,
no shutdown. Go to router 3, command line interface, no, enable configuration terminal interface 300, IP address 192.168.3.1 and no shutdown. Interface 030, IP address 10.0.0.6 क्योंकि हमने वहाँ पे 5 लिया था. And no shutdown. Router 4, no. Enable configuration terminal interface 300, IP address 192.168.4.1/24. No shutdown. Zero 30 interface serial link 030. मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं किया शायद. ओके, तो राउटर 3 पे आओ एंड देन यहाँ पे इंटरफेस 031, IP address 10.0.0.9, 255, 255, 255, 252, clock rate 64,000, no shutdown. IP address 10.0.0.10, 255, 255, 255, 252, no shutdown. Interface 031, IP address 10.0.0.13, 255, 255, 255, 252, and clock rate 64,000, no shutdown. And the last router 1 पे interface 031, IP address 10.0.0.14, 255, 255, 255, 252, no shutdown. Okay, so as you can see, we assigned the IP addresses to devices. Now this is 192.168.1.0 and this is 92.168.1.10. And this is 10.0.0.0/30. यहाँ पे है 0.1 और यहाँ पे है 0.2 पे है 192.168.2.0, 192.168.2.10
यहाँ पे आएगा 10.0.0.4। तो 4 का नेटवर्क है तो यहाँ पे आएगा 0.5 एंड 0.6। यहाँ पे आएगा 192.168.3.0, 192.168.3.10, 10.0.0.8। तो यहाँ होगा 0.9 एंड 0.10, 192.168.4.0, 192.168.4.10, 10.0.0.12। तो यहाँ होगा 0.13 एंड 0.14. Okay, so everything is clear now. Now we will configure the OSPF. So go to router 1, exit. So OSPF basically it is a dynamic protocol जो automatically routes update करता है अपने टेबल पे, ठीक है. So you don't have to do it manually. So OSPF stand for Open Shortest Path First, and it is a link state protocol and it operate within a single autonomous system. ठीक है, तो यहाँ पे जो AS होता है autonomous system, तो वहाँ पे नंबर्स होते हैं, ठीक है. तो नंबर्स हम असाइन कर सकते हैं AS पे. It uses Dijkstra algorithm to calculate the path and it operates within a single autonomous system. Okay, so OSPF configure करने के लिए, so you have to enable OSPF with a process ID. ठीक है, तो इसके साथ एक process ID होती है. I'll take 1. ठीक है, इसकी रेंज होती है 1 to 65,535. ओके, I'll take 1, एंटर. तो हमें यहाँ पे नेटवर्क असाइन करना होता है, ठीक है. नेटवर्क असाइन करना है, यहाँ पे क्या करना है, जो भी कनेक्टेड नेटवर्क है वही हमें यहाँ पे कमांड करना है, ठीक है. अब मैं R1 पे हूँ, तो R1 पे हूँ तो मैं इससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स रहेंगे जो कि है 192.168.1.0 एंड 10.0.0.0 एंड 10.0.0.12. ठीक है, तो ये वाला नेटवर्क हमें यहाँ पे R1 पे कॉन्फ़िगर करना है. 192.168.1.0 with wildcard mask. ठीक है, wildcard mask is a inverse of subnet mask. एंड यहाँ पे हमें एक एरिया कॉन्फ़िगर करना होता है. एरिया इज इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन OSPF. ठीक है, तो एरिया 0. We use OSPF areas to reduce the size of the LSTP on routers. ठीक है, लिंक स्टेट डेटाबेस. तो ये क्या करता है, लिमिट करता है द स्कोप ऑफ LSA फ्लडिंग. ठीक है, जो लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट होता है, फ्लडिंग होती है, तो उसको लिमिट करता है. एंड देन इट रिड्यूसेस द CPU एंड मेमोरी रिसोर्सेज विच नीडेड फॉर SPF कैलकुलेशन. ठीक है, नेटवर्क 10.0.0.0, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क रहेगा 0.0.0.3. एरिया विल बी 0. ठीक है, एरिया हमें सेम यहाँ पे रखना है, ठीक है. देन इट विल वर्क 10.0.0.12, 0.0.0.3 and then area 0. Exit. So go to router 2, enable
configuration terminal, router OSPF 1. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड टू एनेबल OSPF विद द प्रोसेस ID 1. सो यहाँ पे आएगा नेटवर्क. अब राउटर 2 पे जो कनेक्टेड नेटवर्क्स है 192.168.2.0 with wildcard mask will be 255 and area will be 0. और ये 10 वाला नेटवर्क आएगा एंड 10.0.0.4 नेटवर्क 10.0.0.0 0.0.0.3 एरिया 0 नेटवर्क 10.0.0.4 0.0.0.3 एरिया 0. ओके, exit. Router 3 enable configuration terminal, router OSPF 1 network directly connected networks 3.0.0.0.255 area 0 network. यहाँ पे नेटवर्क होगा 0.4 एंड 0.8 10.0.0.4.0.0.3 0 network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0. Exit. Router 4 enable configuration terminal, router OSPF 1 network 192.168.4.0.0.255 area 0 0.8 and 0.12 network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0 0.0.12 3 area 0. So as you can see, OSPF एजेंसी मैसेज आ गया है. यहाँ पे OSPF मैसेज है, ठीक है. प्रोसेस ID 1 है, ठीक है. प्रोसेस ID 1 नेबर जो है वो है 192.168.1.1 विच इज़ राउटर 1 एंड सीरियल लिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है. और यहाँ पे जो है स्टेट फुल है, ठीक है. टेस्ट करना है. फर्स्ट गिव द IP address to PC, then we will ping. Okay, now we will ping from PC1 to PC2. Ping करना है 192.168.2.10. So let's see ये ping होता है नहीं. If we done OSPF configuration properly, so it will work. Yes, replies are coming back. The ping is successful. So you can ping PC3 also.
Yes, PC4. Yes. So the connectivity is done. Now let's do on R2 also. Ping 192.168.4.10. Yes, replies are coming back, pings are successful. Now go to R1 and exit. तो यहाँ पे शो IP route, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो this O denotes to OSPF, or you can see the 10.0.0.4 with the AD value is 110 and wire 10.0.0.2 एंड इधर सीरियल लिंक भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी OSPF है, आप देख सकते हो। Also you can check show IP OSPF neighbor. So neighbor is 192.168.4.1 which is router 4, ठीक है। तो यहाँ पे है स्टेट जो है यहाँ पे फुल है, ठीक है। यहाँ पे डेट टाइम है, यहाँ पे एड्रेसेस है और यहाँ पे इंटरफेस है, ठीक है। ओके, at the last don't forget to save your configuration. Copy running config startup config. Yes, you can also use WR. Okay, all right everyone, that's it for day 8. We successfully configured OSPF and made all routers learn each other's networks. If this helped you, make sure to like the video and subscribe, and the packet tracer lab file is given in the description. Thanks for watching and see you in the next video.